Imagine waking up one day and finding that all your company's data has disappeared from the cloud. How do companies prevent it? Yes, this is cloud security and governance. Let's understand by the other point. Every 39 seconds, a cyber attack happens somewhere in the world. But how do companies protect billions of cloud data records? The answer lies in cloud security and governance. Today we will understand the secret of cloud security and governance. Hello everyone, I am Dr. Mala Sharma. I am going to explain today cloud security and governance under the emerging technologies and application. Watch the video till end. We will discuss some important points and important questions that definitely will help you for your knowledge and your examination. So let's start. Cloud security and governance. Cloud security and governance refers to the policies, technologies, and management practices used to protect cloud data and ensure proper use of cloud service in an organization. क्लाउड सर्विस और क्लाउड गवर्नेंस की बात करते हैं का यूज ऑर्गेनाइजेशन में क्लाउड डेटा को सिक्योर रखने के लिए और क्लाउड सर्विस का प्रॉपर यूज इंश्योर करने के लिए कंपनीज करती हैं. Cloud security focuses on protecting data, application, and cloud infrastructure from cyber threat, data breaches, and unauthorized access. Cloud security का फोकस होता है डेटा एप्लीकेशन और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर थ्रेट, डेटा ब्रीचेस और अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना. सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, क्लाउड पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हैकर और मिसयूज से सेफ रखना ही क्लाउड सिक्योरिटी का मेन पर्पस है. यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं. अगर एक कंपनी अपना कस्टमर डेटा Amazon वेब सर्विस पर स्टोर करती है तो वो इंक्रिप्शन, फायरवॉल और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करती है ताकि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन डेटा एक्सेस ना कर सके. In short, cloud security ensures that cloud data and system remain safe and protected. Now let's understand the cloud governance focuses on rules, policies and processes that control how cloud resources are used within an organization. क्लाउड गवर्नेंस का फोकस रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसेसेस पर होता है जो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्लाउड रिसोर्स का यूज कैसे होगा. सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, क्लाउड गवर्नेंस इंश्योर करता है कि राइट पीपल राइट वे में क्लाउड सर्विसेज यूज करें और कंपनी पॉलिसीज फॉलो हों. एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज करती है तो गवर्नेंस पॉलिसीज डिसाइड करती हैं कौन एम्प्लॉय क्लाउड डेटा एक्सेस कर सकता है, कौन न्यू क्लाउड रिसोर्स क्रिएट कर सकता है और डेटा का बैकअप और कंप्लायंस कैसे मेंटेन होगा. इन शॉर्ट, क्लाउड गवर्नेंस कंट्रोल्स एंड मैनेजेस हाउ क्लाउड रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Let's understand the key components of cloud security and governance. Identity and access management. Identity and access management provide the control who can access the cloud resource and data. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले और वो आइडेंटिफाई करता है कि हम राइट यूजर्स हैं. Now moving to the next, data encryption. Data encryption protects sensitive information by converting it into coded form. Yes, data encryption हमारे किसी भी डेटा को, हमारे बैंक डिटेल्स को, हमारे पासवर्ड को अदर लैंग्वेज में, अदर कोड्स में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम डेटा एन्क्रिप्शन कहते हैं. इससे हैकर्स हमारी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाते हैं. Now we are talking about the security monitoring. Continuous monitoring to detect suspicious activities or cyber threats. This is a mechanism where continuous monitoring is going on to detect hackers, suspicious activities or cyber threats. Yes, this is security monitoring. And the next is policies and compliance. Organizations create rules and guidelines for secure cloud uses. Every organization can make their own policy on compliance depending on the nature of the organization, the requirement of the organization. Risk management, identifying potential threats and taking preventive action. Yes, it identifies potential threats and taking preventive actions. Now let's understand the example of banking. क्लाउड सिस्टम को समझने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को समझने के लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं. अ बैंक स्टोर्स कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म.
एक बैंक अपने कस्टमर का जो डेटा है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सेव करता है, स्टोर करता है। क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कस्टमर डेटा इज इनक्रिप्टेड टू प्रिवेंट हैकिंग। क्लाउड सर्विस यहाँ पर काम करता है कि जो हमारा डेटा स्टोर्ड है क्लाउड पर उसको इनक्रिप्टेड करे प्रॉपर कोडिंग में और उसको प्रिवेंट किया जा सके हैकिंग से। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंश्योर ओनली ऑथोराइज यूजर कैन लॉग इन। यहाँ हम इसको समझते हैं, ओटीपी रिसीव करते हैं, हम ओटीपी एंटर करते हैं, तब हमारा ट्रांजेक्शन पूरा होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू स्टेप वेरिफिकेशन and multi-steps verifications are there so that we can identify the authorized user is using the service of that organization. Now let's talk about the cloud governance. The bank set up policies. The bank sets policies on who can access financial data. यहाँ पर बैंक डिसाइड करता है कि financial access किसके पास रहेगा, कितने लिमिटेड एम्प्लॉइज के पास रहेगा, क्लाइंट पर रहेगा तो किस रीच तक रहेगा। This is the task of cloud governance. IT teams regularly audit cloud uses and security compliance. IT टीम का काम रहता है यहाँ पर गवर्नेंस में, वो ऑडिट करती हैं, सिक्योरिटी के रूल्स का पालन करती हैं। This ensures customer information remains safe and the system runs efficiently. ये इंश्योर करता है कि कस्टमर का इंफॉर्मेशन सेफ है और सिस्टम इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। I hope this example is sufficient to understand the cloud security and cloud governance. Now let's understand the importance of cloud security and governance. The one is protect sensitive business data. Cloud security companies का important business data जैसे customer information, financial records और company document को safe रखती हैं। Example है, एक कंपनी अपना डेटा Microsoft Azure पर स्टोर करती है और इंक्रिप्शन यूज करके उसको सिक्योर करती है। प्रिवेंट साइबर अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस। सिक्योरिटी टूल्स हैकर और साइबर अटैक से डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जांपल है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करने से ऑथोराइज लॉगिंग अटेम्प्ट ब्लॉक हो जाते हैं। आपने देखा है अगर 2 से 3 बार तक आप इसको एक्सेस करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। तो दिस इज ड्यू टू दी सेफ्टी रीजंस। नाउ ensures legal and regulatory compliance. ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट और इंडस्ट्री रूल्स फॉलो करने होते हैं ताकि डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहे। Improves efficient management of cloud resources. क्लाउड गवर्नेंस इंश्योर करता है कि क्लाउड रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज और ऑप्टिमाइज हो। Builds customer trust. जी हाँ, जब कंपनीज कस्टमर डेटा को सिक्योर रखती हैं तो कस्टमर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज पर आते हैं। And the credit goes to cloud security and governance. Now let's understand the key components. किस तरह से हम cloud security और governance follow कर पाते हैं। The one is access control, that deciding who can access cloud data. Yes, anyone cannot access the cloud data. Access control जिसके पास होगा वो ही access कर सकता है। Next is encryption, converting data into secure coded form. Yes, जो हमारा डेटा है वो हैकिंग से बचता है, डेटा ब्रीच होने से बचता है, एंड दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इंक्रिप्शन। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एक्टिविटीज इन द क्लाउड सिस्टम। पॉलिसीज एंड रूल्स, गाइडलाइंस फॉर यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। पॉलिसीज एंड रूल्स गाइडलाइन बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं क्लाउड सर्विसेज के लिए। रियल एग्जाम्पल उनके समझते हैं हम। एक बैंक यूजेस क्लाउड सर्विसेज टू स्टोर कस्टमर ट्रांजेक्शन डेटा। Cloud security encrypt financial data so hacker cannot read it. Only authorized employees can access the information. Governance policies ensure employee follow security guidelines when using cloud system. So here we understood the key component, and these are the really very important key component, and we have to mention everywhere because by these components we can be able to do the cloud computing. Now let's understand data security and compliance in the cloud. Data security in the cloud means protecting stored data from unauthorized access, data breaches or loss. Data security in the cloud का मतलब है क्लाउड में stored data को unauthorized access, data breaches और data loss से protect करना। Data breaches जहाँ पर भी हम expose करते हैं confidential, sensitive and protected information को, this is called the data breaches or loss. Compliance means following legal regulations, policies and industry standards related to data protection. Compliance का मतलब है legal regulations, company policies और industries
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ताकि डेटा प्रोटेक्शन इंश्योर हो। Let's understand important practices. Encryption of sensitive data. Yes, we are repeating this again. Regular backups. Cloud server में regular backups होता रहता है. User authentication and access control. User authentication and access control repeatedly check होता है. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर कुछ टाइम के बाद एक्सेस करते हैं वेबसाइट्स को तो वो आपसे आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए कहती हैं. Okay, and this is the due to the access control. And next is security audits. Security audits होते रहते हैं so that they can identify the legal customer or authentication of the customer. तो यहाँ हमने बात की डेटा सिक्योरिटी और उसके कंप्लाइंस की क्लाउड में कि डेटा को कैसे सिक्योर किया जाता है, उसका कंप्लाइंस कैसे किया जाता है. Now moving to the cloud governance framework. Cloud governance framework is a structured system of policies, roles, and procedures used to manage cloud resources effectively in an organization. Cloud governance framework एक structured system है policies का, roles का और procedures का जो organization में cloud resources को properly manage करने में help करता है. It ensures security, cost control, compliance with laws, efficient use of cloud services. ये ensure करता है security, data और system safe रहें, कॉस्ट कंट्रोल, क्लाउड स्पेंडिंग अननेसेसरी ना हो, कंप्लायंस, लॉ और रेगुलेशन फॉलो हो, एफिशिएंट यूज, क्लाउड सर्विसेज का बेस्ट यूज हो. एंड दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ क्लाउड गवर्नेंस फ्रेमवर्क. हमने प्रीवियस स्लाइड में जो कंपोनेंट्स पढ़े थे वो क्लाउड सिक्योरिटी के स्टडी किए थे. नाउ वी आर डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड गवर्नेंस. द वन इज पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर क्लाउड यूसेस. क्लाउड सर्विस को यूज करने के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं. डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर होता है कौन एम्प्लॉय क्लाउड रिसोर्सेज मैनेज करेगा. कॉस्ट मैनेजमेंट रूल, ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड यूसेस को मॉनिटर करते हैं ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे. रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट्स और रिस्क को आइडेंटिफाई करके प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं. परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, क्लाउड सिस्टम की परफॉर्मेंस और यूसेस कंटिन्यूअसली मॉनिटर किए जाते हैं. Examples are a multinational company use Microsoft Azure for its operation. The company creates cloud governance framework, यानी जो भी Microsoft Azure use करेंगे तो जो कंपनी के cloud governance framework होंगे, company will decide that. The IT department control who can create new cloud resource. IT department control करता है कि Microsoft Azure में cloud resource कौन create करेगा. Departments have budget limited for cloud uses. डिपार्टमेंट्स के बजट लिमिटेड होते हैं क्लाउड यूसेस के लिए. रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट एंड मॉनिटरिंग आर कंडक्टेड. रेगुलर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग कंडक्ट होता रहता है सो दैट हम क्लाउड गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएं. नाउ लेट्स सी दी क्लाउड गवर्नेंस फ्रेमवर्क. यस, क्लाउड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, दिस इज द डायग्राम दैट इज शोइंग एवरीथिंग हियर, ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर. सिक्योरिटी compliance, auditing and budgeting, dashboard, analytics and reports, scheduled policies, monitoring recommendations, operation management, cost transparency and optimization. So this is all about the cloud governance framework. I hope you understood the cloud security and governance properly by this lecture, by this video. I have already promised you that at the last of the video, I will show you the important point and important questions that can arise from your knowledge that can help you to clear your knowledge. Yes, these are the important questions that can be arise from the cloud security and governance framework. And this video is answering all these questions. So remember, cloud security keeps your data safe while cloud governance makes sure it used in the right way. For more easy explanations of cloud computing and technology, subscribe to Wisdom Roots by Dr. Mala Sharma and keep learning with us.